Okay, good afternoon all. Am I audible? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, Good so afternoon, ma'am. let's. Good afternoon. Okay, so let's start. Okay, in the last class we are dealing with cross-cultural communication. Okay, after that there is the uh, biased English and what is that ethics in communication. I will teach all those things. Okay, later part. Today we will focus upon the presentation skills. Okay, and why presentation skills? So before, okay, what is the objective actually? First, you should know the nature and importance of the presentation skills. Then, what are the pre-presentation planning steps? Okay, and what are the elements for preparing the oral presentation? Then, how means we should use the specific techniques for the presentation, how we use the visual aids, how should we practice all these things. Okay, that we will focus. So before going to these presentation skills, okay, first discuss what is actually जो है उसको हम लोग ओरल प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं क्या? मैम हाँ संतोष बोलो. मैम बोले स्क्रीन शेयर नहीं है. तुम्हारा मैं स्क्रीन शेयर नहीं की हूँ आज. ओके मैम. I have to explain about the presentation for that reason. हाँ, तो तुम में से मुझे कोई बता सकता है? मैं जो बोली कि ओरल प्रेजेंटेशन हमारा आज का टॉपिक जो है, इट इज द पार्ट ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन, ए टू वे प्रोसेस एंड अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. सो कोई बता सकता है कि ये जो स्पीच है, डिबेट है, ओके, पब्लिक स्पीकिंग है, कैन ऑल दीज थिंग्स ओके कम्स अंडर ओरल प्रेजेंटेशन? ये सब ओरल प्रेजेंटेशन के अंदर आते हैं क्या? एनीवन? यस मैम, आता है. ओके, सो तुम्हारे हिसाब से जो स्पीच है, डिबेट है, दीज आर द पार्ट ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन. देन एक स्मॉल थिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीच एंड डिबेट? डिबेट और स्पीच के अंदर डिफरेंस क्या है? मैम डिबेट्स, ये स्पीच में हमारा विजन और जो सब हम जानते हैं वो क्लैरिफाई करना होता है ऑडियंस के सामने. ओके, और डिबेट है मतलब पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आइडिया देना है, मतलब बोलना है, स्पीक. ओके, तो ऐसे ओवरऑल देखने में तुम्हारा जो डेफिनेशन है स्पीच, ओके, बिफोर ऑडियंस यू एक्सप्लेन समथिंग, एंड डिबेट इज द सेम थिंग. ओके, यू हैव टू शेयर द आइडिया. यही बात है तो ओके. और किसी का और कोई आइडिया है और किसी का? डिबेट एंड स्पीच के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिबेट एंड स्पीच? और कोई बता सकता है मुझे? प्रशांत, तेजस, क्लास में हो या फिर ऑन करके चले जाते हो कहीं पे? दिव्यांशु? यस मैम. हाँ, कोई तुम्हारे हिसाब से व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीच एंड डिबेट? जैसे कि चिदानंदन बोला कि स्पीच जो होता है ऑडियंस के सामने देना पड़ता है, पर्टिकुलरली कोई चीज है, कोई टॉपिक है उसके ऊपर, एंड डिबेट में यू हैव टू एक्सप्लेन द थिंग्स. सो तुम्हारे हिसाब से स्पीच एंड डिबेट क्या अलग अलग है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीच एंड डिबेट? मैम स्पीच जो होता है वो किसी चीज के बारे में पूरा डिटेल्स होता है अपने तरफ, मैंने अपने आइडिया से. ओके, वो एंड डिबेट? डिबेट मैम एक टॉपिक है उसके बारे में कुछ ऐसा एक्सप्लेन करना है जो शॉर्ट में भी शॉर्ट. ओके, ठीक है. हाँ को हम्म 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 स्पीच?
Okay, the ability to talk, that is speech. Okay. In real, इसको अगर और clearly बताएंगे तो generally debate क्या होता है when we are not, means when there is some controversial things, means according to me the thing is right, according to him the point is wrong. Okay. मैम At that time, हाँ अभिनंदन को मैम डिबेट है एक पर्टिकुलर आर्गुमेंट, मतलब Yes. दो जन एक पर्टिकुलर आर्गुमेंट कर रहे हैं एक टॉपिक के ऊपर और स्पीच से मतलब एक टॉपिक दिया जाता है उसमें जो प्रेजेंटेशन देना. Yes, okay, I am telling. Debate means when there is the argument. Okay, there is the argument means when you explain the things, okay, from your point of view. Okay, and there is the argument means I agree with this point and you are not agree with my point. Your point is something different. Okay, that means what is right, what is wrong. Okay, to find out the conclusion, generally there is the debate. If you go through the news channels, okay, now as it is the time of election, you will find this type of arguments, and this is known as a debate. Okay, speech means again what? Speech means particularly हम लोग जब सेलिब्रेट करते हैं an occasion, okay, in special occasion we celebrate. For example, I can say the welcome speech, the farewell speech. Okay, that means when I describe a particular thing, okay, at that time I am giving the speech. Okay, like in debate it is a two-way communication. You say something, the other opponent speaks something else, and he or she should be very active listener at this place. Okay, but when I am telling you about these things like speech, okay, welcome speech and farewell speech, okay, at that time there is no argument. I can say that to some extent it is a one-way communication, means as a speaker you speak something, as a listener or receiver I receive something, but there is no question, nothing else. Okay, or there is no feedback sometimes. Okay. So when I give the speech, particularly when I welcoming something in the professional world, I bid farewell. Okay. Sometimes when I felicitate a person, means when I appreciate a person or give some reward to a person. A person is awarded as the best teacher. Okay, and as from gift college, okay, we felicitate that person. At that time, what is my point? At that time, I should give a speech about that particular person, from his background, educational background, his achievements, everything I have to explain. So that is comes under your speech. Okay. Then in a inaugural function, there is the speech, like your orientation program. Okay, the guest, they sitting upon the dais and they give their speech, totally their point of view they are sharing with you. Okay, and there is a very little similarities between this presentation and speech. Okay, as I have already mentioned, in the speech there is a one-way communication, but the presentation, particularly the oral presentation, is a two-way communication. Okay, here you have to describe a thing. Okay, or you have to explain a thing. In return, the audience interact with you. There is the option that they can ask you any question, they can clear their doubts. That a form of oral communication. It is a participative, two-way communication process. It is a two-way communication process. Oral presentations are purposeful, interactive. Presentations are purposeful, interactive, formal, and audience oriented. Okay. Oral presentations are purposeful, interactive, formal, and
oriented means, as I am telling that whenever you describe something to anyone, okay, at that time that comes under your oral presentation. Okay, sometimes it is quite complex. Okay, oral presentation is purposeful. What is the meaning of purposeful? Purposeful means the presentation, whenever I give any presentation, definitely I have a purpose. Okay, what is my purpose? That is a different thing, but without any purpose, I can't communicate. Whenever a human being communicate, behind that there is a purpose. And in the oral communication is always purposeful. Without any purpose, we never communicate or give the presentation. Interactive, as I tell you, that here the speaker and the listener both plays vital roles. Okay, they interact with each other, they ask questions. Okay, and generally we present the formal presentations. Okay, and it is audience oriented means while I am giving my presentation, at the time I have to think who my audience are. According to my audience, my topic should be like that. Okay. So what are the basic examples? So write down the examples of oral presentation. Examples of oral presentation. Example: seminar, workshop, student presentation, conferences, product launches, press conferences, etc. So when somebody gives the seminar or there is the workshop, okay, like the students, particularly when you are participating the minor project and the major project, in each and every semester, I hope you have to give a small presentation. Okay, then if there is new product is there in the market, you give the launch or product launch is there at the time, it is also comes under your oral presentation. But the point is there, what is the importance of this presentation skill, or why should we give or study all these presentation things? Okay, maybe we are all are not good public speakers, okay, or we are not professional public speakers like our Prime Minister Narendra Modi ji, or all the motivational speakers or the motivational gurus or the spiritual gurus. Okay, still, okay, we have to make the presentation at some point of our life. Okay, some point of our life means like you are the student, and as a student you have to give the presentation, particularly on the seminars, sometimes the research papers. When you go for the higher studies and you are doing your research, at that time you have to give the presentation. Now in this semester, okay, this presentation is the part of your curriculum. That means in lab activity you have to give a presentation. In third semester onwards, you have to give the presentation for your minor or major projects. When you prepare any project, after that also you have to give the presentation. Okay. Let it be like I can say that I am an entrepreneur, okay, or business executive. At the time I give the presentation for my new product. Okay, let it be asked. Okay, here I have to make the oral reports as an engineer. What is my development? What are the new things I have gone through? Okay, for that reason, I have to make oral reports, present seminars. Okay, project presentation. कोई project में काम कर रही हूँ, तो for that also at the end of the project, presentation as a team leader, I have to explain the presentation. Project. For that reason, I have to give the presentation. Okay, so in our professional world, wherever you are, like I am an academician, okay, I'm a lecturer. So in the classroom, generally, I have to each and every day I am giving the presentation. But apart from that, in the selection procedure, also I have to go through this. Means when I have facing the interview, okay, at the time I have to take a demo class.
That means I have to give a small presentation on my own topic. So in business field also, in my professional career, the presentation skills plays a very important role. Okay, and depending upon if your presentation is quite good, enhance your business, it enhance your professional growth. But if you have a poor presentation, your presentation is quite poor, your ideas are very poor, then your professional image, okay, it reduces. Okay, and maybe sometimes there are so many losses in your business field. For that reason, we should know how to present our ideas, particularly in a very persuasive way or in a motivational way, so that our audience, okay, feel interested in our presentation. We should use some visual aids so that we are able to bind the attention of the audience. And also you can say that for that reason, it also enhance my confidence. Okay, and how should I prepare my presentation so that my present it reflects that I am a very confident and a good speaker. Okay, so to do all these things, okay, means while I am giving the presentation, okay, I should have to focus some small things like how should I make the presentation, or what is the introduction part, or how should I begin my presentation. What is the way, how effective the way is. Okay, and whatever my ideas are, how I should arrange all these things in a systematic way. And the most important part is how should I conclude it, because sometimes though I start very beautifully, at the end I'm not able to conclude it in a proper way. Okay, so to be a very good speaker, you need suitable title. Okay, choosing a suitable title. So first thing is planning. Under planning, how should we plan? Okay, let me ask you a thing, small thing, then you can understand that actually what the planning means. Okay, like I am telling that planning the presentation means defining the purpose, analysis, audience, uh, or analyzing the occasion, or choosing a suitable time. So let it be, I just ask you a question. Let it be कि तुम लोग एक पिकनिक जाना चाहते हो, तो जाने से पहले क्या करोगे? तुम्हें कहीं पे पिकनिक जाना है, यू वांट टू गो टू अ पिकनिक. पिकनिक जाने के लिए क्या करोगे तुम लोग? प्लेस सिलेक्ट करेंगे पहले. प्लेस सिलेक्ट करोगे, फिर पहले प्लान करेंगे. हाँ, प्लान करोगे. अंडर प्लानिंग तुम लोग जैसे बोल रहे हो कि प्लान करोगे कि पहले हमें कब जाना है. ओके, लाइक अभी समर आ रहा है बहुत जल्दी, अभी तो थोड़ा थोड़ा मतलब कि गर्मी शुरू हो गया है. दैट मीन्स रिसेंटली हम लोग जाना पड़ेगा. फर्स्ट. सेकेंड पॉइंट क्या हुआ तुम्हारा? कहाँ पे जाना है. उसके बाद क्या करोगे? कैसे जाना है. कैसे जाना है. ओके, देन फिर क्या करोगे? क्या क्या लेके जाना है. क्या क्या मैम क्या क्या लेके जाना है पिकनिक क्या पे. क्या लेके जाना है. ओके, और क्या बोले आशीर्वाद? क्रिएट इनविटेशंस. बट पिकनिक जाने के आते हैं whenever there is a marriage party, at that time you invite, but picnic के लिए a general meeting with your own friends is enough. But yes, you have to invite the teachers. For that reason also invitation is not necessary, but yes, first we have to invite. Okay, then और क्या करते हो? और क्या करते हो पिकनिक जाने से पहले? मैम चंदा. यस, दैट इज द मेन इंपोर्टेंट पॉइंट. पहले पैसा कितना कलेक्शन करना पड़ेगा. ओके, पैसा कितना है उसी हिसाब से यू हैव टू डिसाइड कि कहाँ जाना है, कितना पैसा कितना होगा. और
फिर या फिर ये डेस्टिनेशन है कि यहाँ पे जाना है तो कितना पैसा खर्चा होगा एंड पर हेड कितना, दैट इज द प्लानिंग। तुम लोग जब पिकनिक जाते हो ये सब प्लानिंग करते हो, आफ्टर दैट तुम्हारा जो है प्रिपरेशन जो है वो शुरू होता है। प्रिपरेशन मीन्स लाइक मैं के बारे बोल सकती हूँ कि पिकनिक जाने के लिए तुम्हें सब्जी खरीदना है या फिर नॉन वेज खरीदना है, बाकी जो अरेंजमेंट्स है उसको खरीद के लाना है, बस में जाना है तो बस को अरेंज करना है, ओके वो ठीक ठाक है या नहीं, उसमें पेट्रोल है या नहीं, साउंड बॉक्स है ना नहीं, वो सब प्रिपेयर करते हो। तो दैट इज द सेकंड पार्ट। फर्स्ट हम लोग आते हैं प्लान के बारे में। तो प्लानिंग में मैं क्या बोली, प्लानिंग प्रेजेंटेशन में फर्स्ट थिंग क्या था ना, डिफाइनिंग द पर्पज। डिफाइनिंग द पर्पज मीन्स व्हाट ना, whenever there is I plan something, first I have to find out what is my purpose, okay, or why I am giving this purpose, which is the most important questions that should be answered generally, definitely। हमेशा अगर तुम में से कोई पर्सनल इंटरव्यू फेस किए हो तो ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि why should I hire you, okay, या फिर why I choose this subject, computer science or mechanical or electrical, why don't you choose the other classes, other branches, okay. So whenever you plan for some presentation, your first job is that what is the purpose, okay, and you have to find out the answer, okay. If you find out the answer, then you are quite focused upon your presentation and you know your objective, what is the objective of my presentation. Like I give you the examples of that presentation is seminar, conference, press conferences, product launches, okay. These are my the example of the presentation. So first, while I decide that I should give a presentation, then my point is that why should I give the presentation? What is my purpose? It is for information. I want to give or share some information with the audience. I want to persuade or I want to motivate, change the behavior of the audience, change their beliefs, values, okay, or to demonstrate means to help the listener how to do something, okay, how to do something, that means I demonstrate, okay. The point is that as I have already mentioned that this oral presentation is the part of your curriculum, okay. Not only you have to write down the 10-mark question answer regarding oral presentation, even you have to get questions from multiple short questions. Apart from this also you all have to give a presentation in your lab, okay. That means today I explain you only the planning, then I explain the other piece of communication. After this, as you are at home now, तुम हर कोई अपने घर में हो अभी, so I don't have you don't have any problem. Prepare your own PPT presentation when the college will open, okay. At that time, in your lab class, you all have to present or give the presentation, okay. So उसके लिए तुम्हें क्या क्या करना है? फर्स्ट क्या करना है कि तुम्हें क्यों देना है प्रेजेंटेशन। तो अभी तुम्हारा काम, तुम एक लैब में क्यों जो दोगे, तुम्हारा पर्पस क्या है, क्यों दोगे, क्यों प्रेजेंटेशन दोगे? मार्क के लिए। यस, डेफिनेटली मार्क के लिए, ओके। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है ना, यू वांट टू गेट सम मार्क। तो मार्क के लिए तुम्हें कैसा देना है, either you have to share some information, some new ideas, some informations are there you have and you want to share, okay. There is no need to change or motivate the people because यहाँ पे मार्क के लिए तुम्हें किसी का मोटिवेट करना नहीं है, किसी चीज को प्रोडक्ट को बाय करने के लिए भी तुम्हें बोलना नहीं। और टू डेमोन्स्ट्रेट कब करोगे ना, तुम लोग जब भी अभी यहाँ पे तुम जो करोगे वो शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन, बट जब यू मेक योर ओन प्रोजेक्ट, जो माइनर है मेजर है, उसको जब प्रोजेक्ट उसके ऊपर दोगे, एट दैट टाइम यू डेमोन्स्ट्रेट मींस लेट इट बी कि ये एक नया तुम्हारा एक्वागार्ड फिल्टर आया है, ओके, तुम लोग खुद बनाए हो तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए। So now you have to explain how this water filter works, all these things. So first you have to identify the purpose of the presentation, okay, which helps you, okay, to think about your audience, okay,
what is their need, what is the knowledge, what is their expectation. Okay, and also it focus on the behavior of the audience and the research topic, sorry, and the speech topic of that particular speech. ओके, तो ये हो गया तुम्हारा पर्पस, तुम्हें क्यों प्रेजेंटेशन देना है. जैसे अभी तुम्हारा पर्पस क्लियर है कि टू गेट द मार्क इन योर एग्जाम इन द लैब यू हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन. ओके, उसके बाद क्या करना है तुम्हें. फर्स्ट मैं बोली डिफाइन द पर्पस, सेकंड क्या बोली थी ना, एनालाइज द ऑडियंस. एनालाइज द ऑडियंस में क्या है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट हु योर ऑडियंस आर. जैसे तुम अभी दे रहे हो तो यहाँ पे ऑडियंस कौन है, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स जो है वो तुम्हारे ऑडियंस है, इंक्लूडिंग विथ योर टीचर. ओके, एंड यहाँ पे फिर क्या है ना, यू नो व्हाट इज देयर अंडरस्टैंडिंग लेवल. तुम्हें पता है उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, कितने जन है. ओके, देयर इज नो नेसेसिटी टू डिस्टिंग्विश द डेमोग्राफिक्स. ओके, बैकग्राउंड क्या है पता है, एनवायरमेंट क्या है, फाइंड आउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. तुम्हें देना है तुम्हारे दोस्त लोग को. as you are quite joined or you are quite acquainted with them, you know that when you give the presentation, maybe some people are there, those who are not interested at all to listen you. Okay, so you know their characteristics, it is better. Okay, what is their belief, what is their values, you have to respect all those things. Okay, then क्या करोगे ना, analyze the audience's needs and expectation. Okay, like तुम दे रहे हो अभी लैब क्लास में, इंग्लिश लैब में प्रेजेंटेशन, तो तुम्हारा ऑडियंस कौन है, तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स एंड मी. तो यहाँ पे मेन फोकस प्राइमरी ऑडियंस कौन हूँ, मैं हूँ. मुझे क्या चाहिए, तुम्हारा प्रेजेंटेशन शुड बी इन सच ए वे दैट आई शुड गिव यू गुड मार्क. मतलब तुम्हें तुम्हारा प्रेजेंटेशन के थ्रू में मुझे इंप्रेस करना है. ओके, सो यू नो कि फाइव योर द लिसनर इज लिसनिंग. ओके, वो क्या क्यों बैठे, क्यों वो अटेंड कर रहे हैं. ओके, एंड उनका एक्सपेक्टेशन ये प्रेजेंटेशन से क्या है. ओके, दैट मीन्स इफ यू फाइंड आउट द आंसर, इसमें तो अगर तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया कि फाइव व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ऑडियंस. ओके, एंड मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आई शुड कीप गुड मार्क्स इन दिस प्रेजेंटेशन. मींस आउट ऑफ 25 आई शुड सिक्योर 24. तो माय एक्सपेक्टेशन शुड फुलफिल द नीड्स ऑफ द रिसीवर. जो रिसीवर है, जो ऑडियंस है, उनका जो नीड है वो अगर क्लियर हो गया तो डेफिनेटली आई गेट गुड मार्क्स. ओके, देन और क्या है ना, in between you have to do what, now recognize the factors for getting and maintaining audience attention. ये जो audience है, तुम्हारे friends है, तुम्हें पता है listening skill is very poor. so मैं ऐसे क्या करूं मेरा presentation कि वो पूरा जितना टाइम में दूं उसको केयरफुली सुनेंगे. ओके, मतलब कि पूरा अटेंशन देंगे. एंड मतलब पॉइंट्स, जो स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए. Okay, and the way you are giving the presentation so that the listener should give immediate feedback. Okay, ये मुझे मेरे दिमाग में रखना होगा. Like I am the audience and I told that you have to give a presentation. Let it be कि तुम क्या किए ना, अपना presentation जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हो. ओके, एट दैट टाइम फॉरगेट अबाउट द ऑडियंस. तुम एक ही क्लास में 70 आउट ऑफ 70 60 स्टूडेंट्स मे बी देयर, बट ऑल आर माय फ्रेंड्स. अपार्ट फ्रॉम दिस ओनली 20 स्टूडेंट्स विल लिसन इट केयरफुली. ओके, इंक्लूडिंग मैम. सो while I give my presentation the suggesting, but let it be कि तुम क्या किए ना, कि तुम्हारा जो टॉपिक है वो तुम मैथमेटिक्स से चूज किए because you think that it's quite easy to demonstrate. Okay, and your friends may get easily understand all these things. Right point, ये हो सकता है. But तुम्हारे ऑडियंस में तुम्हें जो मार्क देगा, like I am the primary audience and you are going to deliver a speech or deliver a presentation on mathematics. Definitely, maybe I am quite
पुअर इन मैथमेटिक्स, मे बी मेरे समझ में मैथमेटिक्स नहीं आएगा. Okay, and you give a presentation, prepare everything. You think that okay, my audience is this. Okay, they are at least they can understand this mathematics, but you don't know background of your audience. As they are your friends, you taken for granted, and as your teacher, you think that the teacher may know everything, but maybe I am quite poor in mathematics. Okay, that means here, if I should not properly analyze the audience, then it's quite difficult for me or on my part to take or to maintain the attention of the audience. Okay, ये हो गया audience analysis. After that, what I have to do? After that, I have to analyze the occasion. Analyze the occasion means what is the occasion? Why am I giving this presentation? जैसे तुम्हारे लिए occasion क्या है? Lab class है, and you have to deliver the presentation to gain some. और उसको larger scale में देखेंगे, जैसे I am explaining that it may be a seminar. Okay, then you have to see that ये जो seminar है, ये international level में है, state level में है, या departmental wise हो रहा है. Okay. And if it is an international conference, then at which point I should present my views. Okay, and what is my particular topic? Do they assign me a topic or I can assign my own topic? Okay, then ये जो event है, am I familiar with it? मतलब कि ये कॉलेज में हो रहा है तो it's okay, क्योंकि मुझे I am familiar with the surrounding. लेकिन ये जो सेमिनार है ये बाहर कोई हो रहा है, so at that time it's difficult for me to have the control over the situation. So at that time what I should do, so मतलब कि occasion जो है उसी हिसाब से I have to analyze. Okay, in between I have to find out who is the sponsor of this occasion. Apart from that, also where is okay or what is the venue, what are the other speakers. यहाँ पे other speakers जो है वो कौन कौन है, खाली मैं दे रही हूँ या बाकी other speakers भी हैं. I have to analyze each and everything or analyze the occasion first. And if I analyze the situation, like I may already explained, the situation is that getting mark. Okay, your situation is quite formal. You need a formal. Sorry, you want to give a systematic presentation. Okay, so what are the other speakers? Who is the sponsor? You have to mention. If apart from this, also you have to find out what is the duration of my presentation, because it is a 15-minute speech presentation or 30-minute presentation or 1 hour presentation. Okay, it is very necessary to know. You should know all these, otherwise तुम्हारा जो presentation है, तुम्हारा ये जो planning, अगर कोई काम बिना planning के करेंगे तो अच्छे से नहीं होगा. लेकिन हम लोग को पता है, okay, as जो होता है ना planning में रह जाता है and we do not move forward. Okay, that is the other part. Okay, so you have to analyze the occasion. After that you have to choose a suitable title. अभी क्या हो गया? पर क्या किए? You analyze the audience. Audience analyze कर ली, occasion भी तुम्हें पता चल गया कि ये occasion है. Okay. After that अभी दिमाग में आएगा कि what is the topic I should give. कौन से topic के ऊपर मुझे presentation देना है. ठीक, और topic क्यों चाहिए? क्योंकि जब भी तुम लोग कोई चीज देखते हो उसका ट्रेलर हमें हमेशा मतलब कि ये अच्छा होगा नहीं होगा ट्रेलर देख के ही पता चल जाता है मैक्सिमम टाइम. ओके, सो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एक सुइटेबल टाइटल तुम्हारे प्रेजेंटेशन के लिए चूज. लेट्स लिसन. ओके, सो दे हैव अ फर्स्ट इंप्रेशन व्हेन यू चूज ए पर्टिकुलर टाइटल. अपार्ट फ्रॉम दिस क्या देखना है कि ये जो टाइटल है ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है, एंड ये कन्वे द मैसेज, एसेंस ऑफ द मैसेज दैट यू वांट टू शेयर, ये कर रहा है या नहीं कर रहा है. बिकॉज कि तुम्हारा टाइटल अगर थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, टॉपिक चेंज हो जाएगा, तो ये क्या करेगा ना, मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसलीड करेगा योर ऑडियंस को. ओके, एंड तुम्हारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक तुम जब ओकेजन के वाइज देखे, ओकेजन को देखे, तुम्हारे ऑडियंस को देखे, ओके, टाइप को देखे, देन तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन पर्पस है
ओके वो जाके लाइक आई हैव टू स्पीक द इकोनॉमिकल थिंग्स, सोशल थिंग्स, या फिर पॉलिटिकल इश्यूज, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज और एनवायरमेंटल इश्यूज, और आई एम सेलिंग अबाउट प्रॉपर्टी, डेमोक्रेटिक, एजुकेशन। ओके इसके ऊपर मैं दे सकती हूँ या नहीं दे सकती फास्ट। देन उसके बाद क्या है ना कि जैसे कि कोई चीज के लाइक आर्टिकल 370 उसके ऊपर मुझे देना है, तो उसमें डाटाबेस क्या है। ओके तो वंस यू चूज अ suitable time, topic of a presentation, okay, it helps you to narrow the little focus upon the presentation। मेरा लेआउट हो गया कि मुझे इसी टॉपिक के ऊपर ही देना है। ओके तो यहाँ पे क्या हो गया, जो टॉपिक है अभी उसको नाम को थोड़ा छोटा करेंगे, लेट इट मिलेगा मे बी दिस प्रेजेंटेशन इज फॉर ओनली 10 मिनट, तो एट दैट टाइम तुम्हें क्या करना है। ओके सो ये जो है तुम्हारा टॉपिक है उसको क्या करना है तुम्हें, यू हैव टू चूज एन अप्रोप्रिएट टॉपिक। जितने तुम्हारे पॉसिबल टॉपिक्स है यू हैव टू नोट इट डाउन। ओके देन यू हैव टू इवैल्यूएट कि क्या करने पे मुझे अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू, योर आइडिया शुड बी क्लियर, इट शुड बी कंप्लीट, स्पेसिफिक एंड फोकस्ड। ओके तो इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा जो ऑडियंस है यू कैन तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन है तुमसे ओके वो फुलफिल हो पाएगा। ओके एंड ऑल्सो हेल्प्स यू टू प्रिपेयर योर ओन प्रेजेंटेशन इन अ बेटर वे। सो while the elements of a presentation, there are 4 P's of presentation like planning, prepare, practice and perform. Planning, prepare, practice and perform. Remember all these 4 P's. Okay and in planning first you have to know, define the purpose, what is your purpose, then define your audience, then analyze the occasion, then choose a suitable type। इतना तुम्हें करना है। तो तुम्हारा आज का काम क्या है, आज we are learning about presentation। तुम्हें आज पूरा presentation पेपर बनाना नहीं है, you have to only plan for the presentation। तुम्हें अभी क्या करना है, कॉलेज खुलने के बाद जो प्रेजेंटेशन देना है उसके बारे में प्लानिंग करना है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट ओवरऑल थिंग्स, लाइक ओवरऑल थिंग्स में क्या है, प्रिपेयर क्या है ना, एग्जाम के लिए मुझे लैब में देना है, लैब में हाउ आई शुड गिव, आई हैव टू गिव द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो मुझे क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, पेन ड्राइव चाहिए। ओके तो लैपटॉप एंड पेन ड्राइव जो है, लैपटॉप मेरे पास नहीं है, अगर नहीं है तो व्हाट इज द अदर थिंग आई कैन डू, I may draw the picture properly. Okay then for my audience what is the occasion, yes you have to find out, and after that choose a title of that presentation which will help you in the latter part। okay अपना presentation का जो prepare करोगे तो टाइटल हो जाने पर it's quite easy for you to elaborate the thing। ओके समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। सो प्लानिंग, तो तुम्हारा आज का काम है, तुम अभी प्लानिंग करोगे, कल बाकी जो 3 P's है उसको बताऊंगी। आफ्टर दैट तुम्हारा मैं अभी तुम्हारा स्केलेटन दे रही हूँ, उसके बाद तुम्हारा ब्लूप्रिंट पूरा प्रिपेयर करना, कॉलेज आने के बाद यू हैव टू गिव योर प्रेजेंटेशन। अब उस टाइम मुझे मत बोलना मैम मैं क्लास में नहीं थी, ये वो मत बोलना, ठीक है? सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। ओके लेट मी मैम कोई टॉपिक ऊपर है कहली ना तुम निजे टॉपिक चूज करियो बोली। फर्स्ट प्लान योर टॉपिक, एनी टॉपिक तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे करियो। फॉर दैट रीजन फर्स्ट यू थिंक, फर्स्ट राइट डाउन व्हाट आर द टॉपिक यू में तुम दे सकते हो, कौन कौन से टॉपिक में ऊपर तुम दे सकते हो। फर्स्ट यू हैव टू प्लान आउट सोशल इशू, पॉलिटिकल इशू, इंटरनेशनल इशू, और फ्रॉम योर इंग्लिश बुक, और डेमोन्स्ट्रेटिंग सम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, फिजिक्स और सॉफ्टवेयर थिंग्स। क्या देना है, किसके ऊपर देना है,
देन चूज द टाइटल. क्या टाइटल होने से इट इज मतलब कि अट्रैक्टिव है, दैट यू हैव टू चूज. तुम्हारा वो काम है. पहले प्लानिंग करो कि किसके ऊपर देना है, आज उसी में दिमाग चेक करो. फिर नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयरिंग जब बताऊंगी तब कैसे प्रिपेयर करना है तुम्हें पता चल जाएगा, तब यू फोकस अपन दैट. ओके. यस मैम. क्लास जॉइन कला पिला तम सेक्शन सब अल्प पिला होचंदी लास्ट क्लास बोली ना करना कॉलेज खोल जे बोली आ क्लास करना आंती. ओके. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को होची. ओहो बेहरा हाउस को कह दीजिए. 1 मिनट. ओके. सुप्रभात मंडल. सुप्रभात मंडल. अमन. हसन. यस मैम. अरुण. दीपक. ओके. रूल 1 प्रेजेंट मैम. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रेजेंट मैम. 11 present. 12 प्रेजेंट मैम. 12 present. Okay. 11 भी present. Okay. 13